Today's video's topic is stop being obsessed or being worried too much. I understand हम जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से या इवन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हमारी जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो ये होती है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो इस्लामिक वैल्यूज़ कैसे इंस्टिल करें, अपना कल्चर उनको कैसे सिखाएं, या हम अपने बच्चों को जो है एक अच्छा इंसान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम किस तरह से बनाएं। तो हम एज अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। और ये हमारी अपने जैसे कहते हैं दिमाग का फतूर होता है। ज़ाहिर है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे जो हालात हैं उससे मुझे लगा कि इफ़ वी पे अटेंशन टू आवर चिल्ड्रन हेयर इन द यूएस, आई थिंक वी डूइंग अ मच बेटर जॉब रेजिंग आवर किड्स एंड आवर चिल्ड्रन टर्न आउट टू बी मच बेटर मुस्लिम्स एंड मच बेटर ह्यूमन बीइंग। बट गिवन दैट माँ बाप को तो ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि विच काइंड ओपन अप माई आइज। एंड समटाइम्स हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पे यकीन भी होना चाहिए, हमारी फेथ का और ईमान का हिस्सा भी है, लेकिन फिर भी हम कहते तो ज़रूर हैं कि हमें वो अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, लेकिन हम आनस्ती दिल से भरोसा कर नहीं रहे होते उस तरह से। तो ये कुछ साल पहले की बात है। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। एट द टाइम आई यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क स्टेट, अपस्टेट्स न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। और during my lunch break one day I was sitting down and talking to some of my colleagues. उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन था जो कि he was very practicing Christian, और वो हर संडे को चर्च जाता था, you know, all that good stuff. So we were having a discussion about faiths, and and then the conversation uh, somehow turned towards raising children. तो मैंने उसको यही कहा कि मैंने कहा देखें, जब आप लोग बच्चे इस मुल्क में रेज़ कर रहे होते हो, तो अगर आपका जो एक बच्चा है वो 18 साल की उम्र तक पहुंच गया है, उसके स्कूल में अच्छे ग्रेड आए हैं, वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गया है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और फिर वो कॉलेज में जा रहा है और वो घर से निकल के इंडिपेंडेंट हो गया है, उसकी जॉब है पार्ट टाइम, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो अकॉर्डिंग टू योर कल्चर ही इज़ अ good kid, he's a good child, you've raised a wonderful child. And he was like, yes, absolutely, what else could you ask from them? And I said, me being a Pakistani Muslim living in this country, that's not good enough for me. And he was like, what do you mean, what else do you want from them? And I said to him, it's not that what I want from them, it's the fact that what my religion wants from them and what my culture demands from them. And I explained to him um, that if my child or my son or my daughter, they reached at the age of 18, they got good grades at school, they were A students, they had no boyfriend or girlfriend, they left the house, now they're going to college, they're pursuing some professional degree, they have a part-time job, they're taking care of themselves, and they have a girlfriend or boyfriend. That's to me right there is I am failing as a Muslim mother. And I explained to him that for your children to be able to get married, they have to have a boyfriend or a girlfriend because they have to find their own spouses. And I told him in Islam, there's no dating, there's no boyfriend, no girlfriend, there's only marriages, and those marriages can be, of course, the girls and boys, they have a say, but they cannot have dating the way these Westerns believe in dating. They can meet the person that they choose to marry or they think they want to marry, and they can talk to them and they can discuss their future, but it has to be done in the presence of all the parents and adults, and in a group setting or in a family setting. They don't have to necessarily sit with the family, they can just sit in a separate area and talk about those things, and that's fine. And I said your child can go and turn to be 21 years old and now he starts drinking, and you're happy that oh my god, my कि मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कानून को फॉलो करते हैं, उन्होंने 21 साल से पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया. Obviously alcohol is legal in the US and other parts of the Western countries. I was like, but if one of my kid was drinking, that will give me a heart attack because alcohol is prohibited in Islam.
तो ऐसे हम बात कर रहे थे, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि दिस इज व्हाट वरीज मी द मोस्ट, बिकॉज व्हेन योर चिल्ड्रन लीव द हाउस, वट एवर दे सी इन द सोसाइटी, that's what's expected of them, and they have to look at those kids, which majority of them are very good children, who are not doing anything until the proper age, and once they start following that, they're wonderful kids, and they are. I'm not saying they're not, but for me, as a Muslim mother coming from Pakistan, I am teaching my children everything opposite to what they see outside of the house. So, whatever is the norm for the Western society is absolutely big no-no for Muslim community and Pakistani community. तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं बहुत परेशान होती हूँ उस वक़्त. माई डॉटर वाज आई थिंक 4 years old and she was going to a private school and it was girls only school, और मैंने उसको जानबूझ के वहाँ डाला हुआ था. I was like, you know, it's better if she just doesn't have that connection with boys, you know. तो मैंने उसको बताया, and I was paying lots of money for that private school too, because private schools are very expensive in the United States. So I explained to him and I was like, you know, I am paying lots of money for my daughter's education. I could save that money for her college, but I'm just scared and I'm nervous and I just don't want to take a chance. So he made a very profound, he gave me a very profound answer. And it kind of blew up my mind. And I was like, you know, sometimes as a Muslim, हमारी faith इतनी कमज़ोर होती है और हमारा ईमान इतना कमज़ोर होता है कि हम बस अल्लाह पे यकीन ही नहीं कर रहे होते. मुझे उस बंदे ने कहा, वो क्रिश्चियन था, और उसने मुझे ये कहा कि लिसन, हमारा काम है सिर्फ बीज बोना और उसको पानी देना, बाकी सब कुछ अल्लाह ने करना है. And his exact words were, our job is to plant the seed and water the seed. He will take care of the rest. Why do you worry so much? As long as you're doing your job, you're teaching them the values, and you're practicing those values at home yourself, and your children can see it, that's all you can do. And you can pray for them, you can make dua for them. Of course, he didn't say make dua, he said you can pray for them, and God will take care of the rest. And if he doesn't, and for some reason your children don't turn out to be the way you want them to be, there is a wisdom behind it. There's a reason why he didn't make them the way you wanted them to be. Maybe they will become something better than what you expected them to be. Just because they don't fit into your box of expectations, that doesn't mean they're not good children. तो खैर, then he kept going on and on for, you know, good 5-10 minutes, and उसके इस बात से it kind of opened up my eyes, और मुझे लगा कि देखो, एक ईसाई है और उसका खुदा पे कितना अच्छा ईमान है, और उसको अपनी लिमिटेशंस का पता है. ही नोज कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला करते हैं. हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को तरबियत दें, उनको समझाएं, खुद वो सब कुछ प्रैक्टिस करें जो हम प्रीच कर रहे हैं उनको, ताकि वो हमें एज अ रोल मॉडल देख सकें, और उसके बाद हम रब से दुआ कर सकते हैं. इसके अलावा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कुछ कंट्रोल नहीं करते. उस बीज जो हमने बोया है, उसने दरख्त बनना है या नहीं बनना, ये तो अल्लाह मियाँ को पता है ना. उस पर फल लगना है या नहीं लगना, ये भी रब का कमाल है. हम तो उसके बाद हमारी तो बेबसी शुरू हो जाती है. हमारा तो बस इतना इतना ही हमारे बस में है कि हम ज़मीन को खोद के उसमें बीज लगा दें. तो बस बच्चों के मामले में भी हम इतना ही कर सकते हैं कि हम उनके दिमाग में एक बीज बो सकते हैं कि हम, these are our values, these are our cultures, these are what we're accustomed to, और उसके बाद we can just pray for them. और उसके बाद अल्लाह के हाथ में है, रब के हाथ में है कि वो उसमें कितनी बरकत डालता है, कितने हमारे करतूत कितने अच्छे या बुरे हैं उसके हिसाब से कभी कभी होता है. कभी कभी हमारे लिए अल्लाह एज अ टेस्ट उनको हमारे लिए, वो जैसे कहते हैं इम्तहान के तौर पे हमारे बच्चों को हमारे सामने ला खड़ा करता है. तो वो तो फिर रब की मसलहत होती है, वो तो फिर रब के काम है, उनको तो हम नहीं बदल सकते. तो बॉटम लाइन ये है कि स्टॉप वरीइंग टू मच, डू योर जॉब एज अ पेरेंट. और ये जो मैं सारी बातें बताती हूँ, मैं इसलिए नहीं बताती कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम ऑल नोइंग, एंड मुझे बड़ा पता है बच्चों को रेज करने का, एंड आई जस्ट वांट टू ऑलवेज प्रेज माय चिल्ड्रन. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. मैं ये इसलिए बताती हूँ कि देयर आर द थिंग्स दैट वर्कड फॉर मी, द थिंग्स दैट ब्रॉट पीस एंड calm इन माय लाइफ. You should try them too. Maybe it will work for you as well. और उस दिन के बाद से, वो दिन और आज का दिन, मैंने परेशान होना छोड़ दिया. मैंने बस ये किया कि
अपने बच्चों को जो भी मैं बता सकती थी, जितना मेरा टूटा फूटा इल्म था, मैंने अपने बच्चों को आई passed it on to my kids. I kept them connected with those programs and those curricular activities, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि उनको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बना सकती थी. एंड आई डेफिनेटली मेड लॉट्स ऑफ दुआ फॉर देम. दुआ इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ. और हमें कभी भी अल्लाह ताला से किसी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी हमें अकम्पलिश करनी है, हमें रब से दुआ मांगनी चाहिए. और मेरा यकीन है, मुझे अल्लाह पे बिल्कुल 100% भरोसा है कि वो कभी भी आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता. वो तो खैर हमें बताया गया है कि हमारी दुआएं रद्द नहीं होती. तो यस, दे मे नॉट हैपन एट द टाइम व्हेन वी वांट देम टू हैपन, क्योंकि हम जल्दबाज लोग होते हैं. हमें हर चीज़ लाइक वी वांट एवरीथिंग यस्टरडे. कल होना था तो ये कल अभी तक हुआ क्यों नहीं? यू नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. There are unforeseen things that only Allah can see, and He knows what's best for us and what's not best for us. So stop worrying too much. Don't give your kids too hard time. Don't be overprotective. Do your job as a parent. Be the role model for your children, and make lots of dua for them. And inshallah, they will turn out to be wonderful children. And may Allah bless everybody's kids. Ameen. All right, until the next video. Allah Hafiz.